ये तो नहीं करेगा कि आपका सेल्स टैक्स 1700 बन रहा है तो वो 700 डिडक्ट करेगा. वो पूरा वो 1700 का पोर्शन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन सम स्पेसिफिक सिनेरियोज डिडक्ट करेगा. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इससे मतलब क्या 100% डिडक्शन से. नेक्स्ट. Next is from Mohammed Mohsin. In theory, to meet commissioner is easy, but to face it is very difficult as their competency issues. हाँ, अब ये इसीलिए तो अब एसीसी ने ये सारे सेशंस, ये सारी एफर्ट्स आपके लिए हम कर रहे हैं कि आपकी कॉम्पिटेंसी हम बिल्डअप करें. देखिए, कमिश्नर भी आपकी तरह के इंसान है, उनके भी 2 हाथ हैं, उनकी भी एक जुबान है, 2 आंखें हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं. इशू सिर्फ कॉम्पिटेंसी का है ना. तो जब आपकी कॉम्पिटेंसी भी उस लेवल की होगी, देन यू विल फील कंफर्टेबल डीलिंग विद देम, एंड दैट इज आवर एम. कि ये अभी तो हम बेसिक एक्ट्स कवर कर रहे हैं, इसके बाद हमने डिटेल्ड रूल्स कवर करने हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखनी है, इंशाल्लाह ऑल द वे टेकिंग यू टू द लेवल ऑफ मास्टरी. नेक्स्ट. Imran Khan is asking, what are the Punjab sales tax payment obligations of travel agents and tour operators who are not receiving any commission from airline companies for the purpose of issuing and selling air tickets? Schedule 1 and 2 to be covered. Next. Sakib Raza is asking, filing of return should be on billing basis or on cash received from client basis. We'll cover that in a section. Just wait a bit. That's all. That's all. Okay, great. So this brings us to section 15, delegation of power to collect, administer, and enforce tax on certain services. Subsection 1 of section 15 says the government of Punjab may, in accordance with Article 147 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, authorize the FPR or any other federal agency or person to administer, collect, and enforce the levy of tax on such taxable services as it may notify, and in such mode and manner and for such period as may be prescribed, and subject to such limitations, restrictions, and conditions as it may deem appropriate. पंजाब गवर्नमेंट आर्टिकल 147 के तहत अभी भी किसी सर्विस एरिया पे चाहे तो टैक्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द कंडीशंस इट में इम्पोज एफपीआर को इंटरेस्ट कर सकते. Subsection 2 says the government may, by notification in the official gazette, authorize any provincial agency, department, organization, or person to administer, collect, and enforce the levy of tax on such taxable services as it may notify in such mode and manner, and for such period as it may prescribe, and subject to such restriction and conditions as it may impose. Similarly, किसी भी provincial इदारे को भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये responsibility entrust कर सकती है. Subsection 3, at the end of the period prescribed under subsection 1, the tax on taxable services notified under subsection 1 shall be administered, collected, and enforced by the authority in the same mode and manner as all other taxable services. अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एफपीआर को कोई सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो जिस टाइम पीरियड के लिए दी थी, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसको पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन्फोर्स और कलेक्ट करना शुरू कर देगी इन द सेम मोड एंड मैनर एज इट डज फॉर द अदर टैक्सेबल सर्विसेज. Section 16 is about adjustments. Subsection 1 states the authority, again the authority here refers to Punjab Revenue Authority, may subject to such conditions and restrictions as it may specify, allow registered persons to claim adjustments or deductions, including refunds arising as a result thereof in respect of the tax paid under any other law or on any account in respect of any taxable service or goods or class of taxable services or goods provided by them. पीआरए के पास ये इख्तियार है कि कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन अगर स्पेसिफाई करना चाहे करके पीआरए रजिस्टर्ड पर्सन को दूसरे कानून के तहत भी जो टैक्सेस बन रहे हैं उनकी एडजस्टमेंट्स करना अलाउ कर सकती है. Subsection 2 says that for purposes of subsection 1, the authority may adopt the principles or concept laid down in such other law in respect of adjustment, deductions, and refunds, including zero rating principle. अगर PRA ऐसा करना चाहे तो क्योंकि PSTSA is still a quite new law relatively compared to some of the older legislations, तो उनके जो relevant
कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूडिंग जीरो रेटिंग, उसको पीआरए अडॉप्ट कर सकती है. Subsection 3 says, for the purposes of removal of any doubt, it is clarified that no adjustment or deduction of any tax payable under any other law shall be claimed by any person except in the manner and to the extent specified in the notification issued under subsection 1. ये पीआरए कर सकती है, अभी लाजमी नहीं कर रही, ठीक है. सो फर्दर क्लैरिफाई कर दिया सबसेक्शन 3 ने कि इस लिहाज से जो नोटिफिकेशन इशू होगा उसी के हवाले से कोई ऐसा क्लेम किया जा सके. So this brings us to our chapter 3, which is about payment and collection of tax on taxable services. Section 17 deals with the collection of excess tax. Excess tax क्या है? आपने by mistake या by genuine error उससे ज्यादा टैक्स चार्ज कर दिया जो करना चाहिए था, तो अब वो हुकूमत की इमानत बन जाता है. इट्स द सेम प्रिंसिपल जो हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में भी देखा. Let's quickly read through कि ये कहते क्या है. Subsection 1 of Section 17 states, any person who has collected or collects the tax or charge, whether under misapprehension of any provision of this act, किसी provision को सही तरह apply नहीं कर सके, सही तरह उसको understand नहीं कर सके, or otherwise, which was not payable as tax or charge, or which was in excess of the tax or charge actually payable, and the incidence of which had been passed on to the person to whom the service was provided. Incidence has been passed on, tax आपने charge कर दिया है, collect हो गया है. Shall pay the amount of tax or charge so collected to the government. अब वो आपने अपने पास नहीं रखना या आप जाके रिफंड नहीं करना. Incidence पास हो गया तो अब वो हुकूमत को पे करेगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को. Subsection 2 states, any amount payable to the government under subsection 1 shall be deemed to be an area payable under the act and shall be recovered accordingly. Okay. Subsection 3 says the burden of proof that the incidence of the tax or charge referred to in subsection 1 has been or has not been passed to the person to whom the service is provided shall be on the person collecting the tax or charge. Burden of proof भी जी आपके ऊपर, आपने साबित करना है कि incidence of tax pass नहीं होगा. Subsection 18, time, manner and mode of payment. The tax in respect of a taxable service provided during a tax period shall be paid by a person at the time of filing the return in respect of that period under Chapter 6. हम कवर करेंगे, नॉर्मली 15th होती है. 15th फॉलोइंग द मंथ आप रिटर्न जमा कराते हैं, तब आपने ये टैक्स भी पे करना है. For purposes of subsection 1, a taxable service shall be considered to have been provided in a tax period during which किस पीरियड में कंसिडर होगा आपने प्रोवाइड की सर्विस. ए, जिस पीरियड में आपने एक्चुअली रेसिपिएंट को सर्विस दी. बी, एन इनवॉइस फॉर द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विस वाज इशूड और वाज ड्यू टू बी इशूड और सेंट और ड्यू टू बी सेंट टू द रेसिपिएंट. सी, द कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड. सो विच एवर इज अर्लियर, जब आपने इनवॉइस इशू की, जब आपको कंसिडरेशन मिली या जब आपने एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड की, इनमें से जो भी पहले होता है वो डेट कंसिडर की जाएगी कि आपने उस डेट को सर्विस प्रोवाइड की है. Subsection 3 of Section 18 states, notwithstanding anything contained in subsection 1, PRA may by a notification in the official gazette. अच्छा, ये लैंग्वेज इसी तरह होगी, ये फॉर्मल आप देखेंगे कि प्रोसीजर है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करना है, ड्यू रूल्स फॉलो करने हैं. So there is nothing to worry about it really. Direct that the tax in respect of any taxable service or such class of taxable services shall be charged, collected and paid in any other way, mode or manner or time as may be specified in the notification. PRA कोई different way भी बता सकता है कि किसी particular service या class of services पे टैक्स किस तरह चार्ज, कलेक्ट या पे करना है, किस टाइम पीरियड में, किस मोड या मैनर में, by way of a notification in the official gazette. The tax due on taxable services shall be paid by any of the following modes. A, deposit in a bank designated by authority or through such other mode or manner as may be specified by the authority. At the moment चालान जनरेट करके CPR आप जाके बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, लेकिन अगर कमिश्नर आपको कहे तो आप जी बैंक ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर भी दे सकते हैं. जो भी अथॉरिटी अलाउ करे, ये उनके पास पावर है. दिस इज वेस्टेड इन देम अंडर द PSTSA 2012. Section 19, joint and several liability of registered persons where tax unpaid. शुरू में हमने बात की थी कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगर टैक्स अनपेड रहता है तो वो लोग जिनकी ज्वाइंटली या सेपरेटली
लाइबिलिटी बनती है उनको एब्सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनसे टैक्स से कवर किया जाएगा। आपको याद होगा ये बात हमने की। दिस इज द सेक्शन जहां पे अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 1 of section 19 states where a registered person receiving a taxable service from another registered person is in the knowledge of or has reasonable grounds to suspect that some or all of the taxable payment in respect of that taxable service provided would go unpaid as against the requirements of this act. Such person as well as the person providing the taxable service shall be jointly and severally liable for the payment of such amount of the tax unpaid. So concept क्या है? बहुत क्लियर है कि जहां पे आपको ये पता है या रीजनेबली आपको पता होना चाहिए था कि जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं वो टैक्स चोरी करेगा और आपने फिर भी कुछ नहीं किया तो अब आपने टैक्स पे करना। I know it sounds somewhat unfair, but if it is of any relief, यूके के वैट सिस्टम में भी सिमिलर प्रोविजंस मौजूद है। ऑल्दो ये अलग बात है कि वह सिस्टम डेवलप्ड है, डेवलप्ड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हमारे पास अभी नहीं है। Subsection 2 states the authority may by notification in the official gazette exempt any person's service or transaction or class of persons, services or transactions from the provisions of subsection 1. अथॉरिटी के पास ये पावर है कि किसी एक बंदे को, सर्विस को, ट्रांजैक्शन को या क्लास ऑफ पर्सन या सर्विसेज या ट्रांजैक्शंस को इन प्रोविजन से एग्जेम्प्ट करार दे दे। Section 20 sales of taxable activity or transfer of ownership. Where the ownership of any business providing taxable services is sold, transfer or otherwise disposed of as a going concern or activity, the fact of such sale, transfer or other disposition shall be intimated to the commissioner within 1 month of the occurrence of such fact by the former owner. जहां पे आप सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनरशिप, ये करने के 1 महीने के अंदर अंदर आपने कमिश्नर को नोटिफाई करना है जिसने सेल की है, फॉर्मर ओनर ने। Subsection 2, the tax chargeable on the taxable services provided in the business referred to in subsection 1 above shall be accounted for and paid by the person to whom sale or other disposition of such business is made or ownership thereof is transferred, and every such person be liable to registration under the act. New owner जो है उसने tax pay करना है, charge करना है, and would be liable to registration under this act. Section 21, estate of deceased person. Death हो गई, अल्लाह ताला के पास चले गए, अब क्या करना है? Tax liability of a deceased registered person under this act shall be the first charge on his estate in the hands of his successor. बाकी किसी को कुछ और बाद में मिलेगा। पहले टैक्स मैन को, गवर्नमेंट को, रेवेन्यू अथॉरिटी को उसके टैक्स की जो ड्यू शेयर है वो मिलेगा। सो वो कहते हैं ना, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, टैक्स से आप मर की अल्लाह ना करे लगे, टैक्स से आपकी उस सूरत में भी नहीं बच सकते। Section 22, state in bankruptcy. Subsection 1, where a registered person is declared bankrupt, the tax liability under this act shall pass on to the estate in bankruptcy if it continues to operate the business. Bankrupt हो गया, estate वो business run करके कर्जे अदा करने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले टैक्स पे करो, जो टैक्स की liability है। Subsection 2, where the tax liability is incurred by an estate in bankruptcy, अगर वो bankrupt state जो है उसकी tax liability बन गई है, the tax shall be deemed to be a करंट एक्सपेंडिचर, तो उसको उसका करंट एक्सपेंडिचर समझा जाएगा इन द ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट इन बैंक्रप्सी एंड शेल बी पेड बिफोर द क्लेम्स ऑफ ऑल अदर क्रेडिटर्स आर सेटल्ड। सो वही कॉन्सेप्ट कि टैक्स का फर्स्ट चार्ज होता है, पहले आप ये पे करेंगे, फिर किसी और क्रेडिटर की लाइबिलिटी आप पे करेंगे। जी अहमद साहब, कोई क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, ले लें? यस श्योर, ग्रेट। We have received kind of a complaint from Saqib Raza. He's saying, sir, I request you that sometimes we haven't found time to attend webinar, so please try to explain concisely, answer to questioners. Thanks a lot. So then I tried to explain in that we are dealing with around 200 online attendees, and we have to answer all the questions along with we have to cover the topic as well. So they all have to cooperate. So Saqib, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चांद जो है ना उसको जमीन पे ले आऊं। अब वो पॉसिबल नहीं तो मुझे रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा ना, ठीक है। आइडियली हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आपके जहन में जो भी सवाल आता है हम आंसर करते हैं,
लेकिन फिर हम अपना ये टॉपिक कवर नहीं कर सकेंगे। टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना। अब हमारा एक स्कोप डिफाइन हुआ है। शुरू में मैं यही करता था कि तमाम क्वेश्चंस आंसर करता था, उसमें फिर हमें ये टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता था कि जो हमारा स्कोप था उसको कवरेज करने में प्रॉब्लम आती थी। इस पे फिर एसीसीए ने स्पेशली ये रिक्वेस्ट की कि जी फोकस प्लीज हमने इस पे रखना है कि जो स्कोप है। उसके बावजूद जहां पॉसिबल है मैं आंसर करता हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल देता हूँ, लेटर ऑन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर स्कोप और रेलिवेंट क्वेश्चंस के बाद हमारे पास टाइम बच जाए तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम ये चाहें कि हम स्कोप को छोड़कर पहले जो हमारे अपने पर्सनल इश्यूज हैं उसको अगर हम सेटल करें तो वो शायद फिर बाकी सबके साथ अनजस्टिस होगा। इट वुड नॉट बी वेरी जस्ट इन नेचर। सो एज मच एज आई वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड हैव, एंड आई यूज्ड टू डू दैट बाय द वे, I think ACCA team does have a point. That's why I agree to follow that कि हम स्कोप के ऊपर फोकस करेंगे, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है उसको पहले आंसर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बच गया तो हम दूसरे जो अनरिलेटेड या एडवांस क्वेश्चन है उनको आंसर करेंगे। Secondly, I'm going a step beyond. It's not required of me. I do it as a way to give back to my community, you fellow members and affiliates. आपको मैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी देता हूँ। अगर आपका कोई स्पेसिफिक इशू है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो अनरिलेटेड है या एडवांस बेसिस पे है, and I try to respond to you as quickly as possible, and I do reply to all of them either in the next session or by way of a response. So I hope that make things clear, and don't worry, inshallah in due time there would come a time कि आपके questions वैसे ही आंसर हो रहे होंगे, या जब हम एडवांस स्टेज के कर रहे होंगे तो आप उसी वक्त अपने रेलिवेंट इश्यूज पूछ सके। बट यू नीड टू अप्रिशिएट कि दिस इज नॉट प्लान्ड एज अ कंसल्टेंसी सेशन, it is planned as a session to deliver the basic tax laws, and that is exactly what we are trying to focus on. But you would still have my details at the end of the session and you can ask the specific question. I hope that clarifies the matter. Next. Thank you. And with this, we will take first question from Sakib. First, if there is some technical fault in IT services in PRA website due to which we are unable to file return, then whether we have to pay penalty on late filing? No. Okay. Next is from Mohammed Asghar. He's asking, any company has to comply with both Punjab and provincial sales tax rules. If yes, what would be possible stances of requirements of Punjab and provincial tax regulations? Punjab is a province and PSTSA is the provincial sales tax. So maybe you are referring to a different tax, just got confused. If you can just clarify your question, I'll be more than happy to assist. And अभी जो पिछला सवाल पूछा गया उसमें एक चीज क्वालिफिकेशन में ऐड कर दूं, अगर आप मैनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल कर पा रहे और ऑनलाइन सिस्टम PRA की ही प्रॉब्लम है तो नॉर्मली वो डेट एक्सटेंड कर देते हैं और उस केस में वो आपको पेनलाइज नहीं करते। ऐसा आमतौर पे होता नहीं कि इतना लंबा इशू हो कि पूरी 15 दिन गुजर जाए रिटर्न जमा ना हो, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो हो तो द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस और द लॉ ऑफ इक्विटेबल एंड फेयरनेस व्हिच इज enshrined in the Constitution of Pakistan उनको इस चीज से रोकता है। So that would make it clear. Next is feedback from Mohammed Asghar. He's saying, being part of ACCA, unfortunately we are not well aware of Pakistan's taxation laws and regulations. I appreciate this effort by ACCA Pakistan. It's really helpful. Thanks. You are most welcome, Asghar. Next is from Muhammad Naveed Iqbal. He's saying a person provides services in Jan but issued invoice in July. When will he deposit the tax? And on the other hand, the receiver of the services will be able to claim input on the basis of invoice issued date. We just covered this. This would be the earlier date. So in this case, when you are providing the services, which is in Jan. What was the second part? And the receiver? Receiver be able to claim, and the other hand, the receiver of the services will be able to claim input on the basis of invoice issued date. Yes, the date of invoice. If it is earlier and that is the basis, then yes. Depend करता है ना, कुछ इंडस्ट्रीज में इनवॉइस सेम टाइम पे या बाद में इशू हो रही होती है, ज्यादातर में पहले इशू हो रही होती है, कुछ में पेमेंट बाद में मेक हो रही होती है। तो अभी हमने कवर किया कि the earlier of the actual date of service, the invoice date and the date of payment, इनमें से जो भी पहले है that is the date of service, और उसी की बेसिस पे आपने पेमेंट डिडक्ट करनी, रिपोर्ट करनी और क्लेम करनी है। नेक्स्ट
Next is from Moaz Munir. He's saying sales tax withheld on advances given should be paid in the same period or should we wait to receive invoice in order to provide details to authorities. Otherwise, at the time of advance, there is no details for invoice. About to be covered in further sections. Next, a suggestion from Moaz Munir, please also include in your plans to conduct webinars on other topics that would help us in our general grooming as a professional. I would like to answer this part. Sure. Throughout the last year, we have conducted face-to-face sessions as well as webinars on different topics, including IFRS, financial modeling, presentation skills, project management, and lots of other topics. So this is not just tax that we are covering all the topics that are relevant to your field. So. And plus, I would add to what Ahmed shared with you here that in the plan that we are making, and inshallah will be finalized, we have topics covering not just taxation, and taxation is extremely important for you, by the way, perhaps the most important areas considering the major complaint and issue from the marketplace and the members in terms of lack of knowledge thereof. We are also planning to cover the company's ordinance, such relevant local legislations, also leadership skills, negotiation skills. So this is all in the pipeline, and there is a very comprehensive series of CPD planned for you. So just as Ahmed said, stay tuned and keep reading. Next. Next is from Ghulam Sabir. He's asking, what will be PRA implementation if a company have different projects, only one of them providing services? How we manage our registration for that particular project? Do we have to register that project as a separate entity for this purpose? You can. It's optional. It's up to you. PRA का इंसिडेंस तो ये हो रहा है ना कि अगर आप पंजाब में प्रोवाइड कर रहे हो, पंजाब से ऑरिजिनेट कर रहे हैं या पंजाब रेजिडेंट को आप सप्लाई कर रहे हैं एनीवेयर, अगर आपकी बाकी ऑपरेशंस इसमें फॉल नहीं कर रहे तो वो तो नॉन टैक्सेबल सर्विसेज होंगी, उनको आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं. अगर आप सेपरेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के तौर पे इनको रजिस्टर करना चाह रहे हो, there is nothing prohibiting you. It's a decision. Your tax consultant can better guide you looking at your particular circumstances. Next. Sakib brother is saying, thanks a lot, Sir Zaheer. Love to attend all your sessions, but unfortunately, due to job, couldn't find time to listen to you. May Allah bless you a lot. You are doing very well job. Thank you, Sakib. Thank you, Sakib, and we are glad that you are cleared now. And I understand there can be these constraints more so when we are working in the job, and especially at a younger phase. But हमारे पास फ्री टाइम होता है, मूवीज देख लेते हैं, वीकेंड भी होता है, तो या हम इतने सारे काम कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम हम एक आधा अपने सेशन पे गुजारें जो हमारी कैरियर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, तो ये हमें लॉन्गर टर्म में ज्यादा पे ऑफ करेगा. Anyway, that is just my personal perspective. Obviously, we all need to look at our lives and decide the work-life balance. And I look forward to seeing you in more sessions, inshallah. Next is from Muhammad Ahmed Sheikh. He's saying, thank you very much, sir, for your kind guidance and initiative by ACCA. You are most welcome. And that's all. Great. Okay, we will have a question answer session again. Let's continue from where we left off. Section 23, liability for payment of tax in case of private companies or business enterprises. अब हम किस पे specifically focus करने लगे हैं? Private companies or businesses पे. Where any private company or business enterprise is wound up, आपने खत्म कर दिया business, and any tax chargeable or payable by the company or business enterprise, whether before or in the course or after its liquidation, in respect of any tax period, cannot be recovered from the company or business. Every person who was an owner or partner or in or director of company or business enterprise during the relevant period shall jointly and separately with such persons be liable for payment of such tax. बच नहीं सकते. टैक्स की लाइबिलिटी थी, प्राइवेट कंपनी या बिजनेस था, बिजनेस से रिकवर नहीं हुआ, बाकी पार्टनर से रिकवर नहीं हुआ, तो आप पे करेंगे. Section 24, assessment of tax. Subsection 1, where on the basis of any information acquired during an audit, inquiry, inspection, or otherwise, an officer of the PRA is of the opinion that a registered person has not paid the tax due tax नहीं pay किया, on taxable services provided him
और हैज मेड शॉर्ट पेमेंट, चाहे मुकम्मल पे नहीं किया या पार्शियल पेमेंट की लेकिन उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी टैक्स की, द ऑफिशियल और द ऑफिसर shall make an assessment of the tax actually payable by that person and shall impose a penalty and charge default surcharge in accordance with section 48 and 49 जो हम next Saturday को इंशाल्लाह कवर करेंगे. So सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की तरह यहाँ भी ये PRA के पास अथॉरिटी है कि वो आपकी असेसमेंट कर सकता है, रीअसेसमेंट. इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 122 है, सेल्स टैक्स एक्ट में भी है रीअसेसमेंट का, या हमारा सेक्शन 24 है जो ये अलाउ कर रहा है PSTSA में. सब सेक्शन 2 कहते हैं नो ऑर्डर फॉर दिस रिवीजन, जो सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा है, शेल बी मेड अनलेस अ नोटिस टू शो कॉज इज गिवन. इसको कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रा, nobody can be condemned unheard. So पहले आपको शो कॉज नोटिस देगा PRA का रेलेवेंट ऑफिसर, is given to the person in default within 5 years. टाइम बार क्या है 5 years. 5 years तक नहीं पता लगा तो अब आप 5 years से पुरानी चीज पे नहीं जा सकते. From the conclusion of the tax period to which the assessment relates, specifying the grounds on which it is intended to proceed against them, and the said officer shall take into consideration the representation made by such person and provide him with an opportunity of being heard if the person so desire. अगर ऑफिसर को आपकी असेसमेंट पे शक है, पहले आपको शो कॉज नोटिस देगा, वो आपके जो टैक्स पीरियड की बात हो रही है उसके एंड के 5 साल के अंदर होना चाहिए. आपकी अगर कोई ग्राउंड ऑफ अपील है उसको वो सुनेगा, आपकी ग्राउंड्स, अपनी ग्राउंड्स आपको बताएगा किस बेसिस पे वो समझता है कि आपने गलती की या पूरा टैक्स नहीं दिया. आप जो उसका जवाब देंगे उसको वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा टू हेयर यू, उन सारी चीजों को कंसिडर करेगा. उसके बाद अगर उसको स्टिल लगता है कि आपने टैक्स मुकम्मल पे नहीं किया तो फिर असेसमेंट ऑर्डर जारी करेगा. Subsection 3 says an order under subsection 1 shall be made within 120 days of the issuance of show cause notice or within such extended period as the officer may for reasons be to be recorded in writing fixed, provided that such extended period shall ordinarily not exceed 60 days. ये जो असेसमेंट ऑर्डर है आपको शो कॉज नोटिस के इशू करने के 120 डेज के अंदर उसने डिसाइड करके ऑर्डर पास करना है. अगर उसके पास स्पेसिफिक रीजंस है तो उनको इन राइटिंग रिकॉर्ड करके इस 120 डेज को वो 60 डेज बढ़ा के 180 डेज तक ले जाता है. 6 मंथ इज एडिक्वेट टाइम पीरियड. हाँ, उनके पास ये भी अथॉरिटी होती है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इसको और एक्सटेंड कर सके, ये आगे हम देखेंगे. सबसेक्शन 4 स्टेट्स इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3, any period during which the proceedings are adjourned on account of a stay order or proceedings under section 69 जो आगे हम पढ़ेंगे, or the time taken through adjournment by the person shall be excluded. इन 180 days में से अगर आपने adjourn कराया, वो time period stay order लिया या section 69 की proceeding शुरू हो गई तो वो time period इसमें काम नहीं होगा. This is excluding that time period, 120 days plus 60 days. Subsection 5. An order passed by an officer under subsection 1 may further be amended as may be necessary when on the basis of any additional information acquired during an audit, inquiry, inspection or otherwise the officer is satisfied that any tax has been underassessed or assessed at a low rate or any taxable service provided by the person has escaped assessment. The provisions of subsection 2, 3, 4 shall be applicable to an order passed under subsection 5. तो जी ये जो आपका असेसमेंट हो गई थी रीअसेसमेंट, उसकी भी दोबारा रीअसेसमेंट हो सकती है अगर कोई वैलिड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन. दिस ब्रिंग्स अस टू चैप्टर 4, रजिस्ट्रेशन. किसने करानी है जी रजिस्ट्रेशन? आसान जुबान में जो भी बंदा टैक्सेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी पंजाब में परफॉर्म कर रहा है या किसी भी तरह PSTSA के टैक्सेबल परव्यू में फॉल करता है उसने. So section 25 registration, subsection 1, a person shall registered under this act who A. provides any taxable service from his office or place of business in Punjab or is otherwise required to be registered under any of the provisions of the act or the rules. Number C. Third, fulfills any other criteria or requirement which the authority may prescribe under subsection 2.
सो किसने रजिस्टर करना है? जो पंजाब में अपने किसी भी ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस से टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी भी प्रोविजन में पीएसटीएसए के या रूल्स के जिनको हमने आगे कवर करने का प्लान किया इंशाल्लाह उनके अकॉर्डिंगली उसको रजिस्टर होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, या कोई और क्राइटेरिया जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करे उसके तहत उसकी रजिस्ट्रेशन बनती है। आसान जुबान में समझ लें, जो भी किसी भी तरह भी लाइबल टू बी टैक्स्ड अंडर पीएसटीएसए उसको रजिस्टर होना है। Subsection 2 states the registration under this section will be regulated in such manner and subject to such conditions and restrictions as the authority may by notification in the official gazette prescribe. A person who receives a service which is a taxable service by virtue of subsection 2 of section 3 जो हम पढ़ चुके हैं, non-resident का, and is not a registered person shall be deemed to be a registered person for the purpose of the tax period in which such person receives the service. An invoice for the value of the service is issued or sent to or received by the person, or consideration for the services paid by the person, whichever is earlier. Again वही concept है, जब आपको सर्विस मिली, जब इनवॉइस इशू हुई या जब कंसिडरेशन पे हुई, इन तीनों में से जो चीज अर्लियर हुई है उस डेट को कंसिडर होगा सर्विस आपको रिसीव हुई है। और जब सर्विस रिसीव हुई है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप रजिस्टर्ड पर्सन कंसिडर होंगे। And all the provisions of this act and rules shall be applicable to such person for this particular tax period and any matters relating to, arising out of, or concerning that tax period as if that person had provided the service. The authority may publish on its website a list of persons registered under this act, straightforward, self-explanatory. Subsection 5, it shall be reasonable for a person to believe that another person is registered under this act if that other person is on the list placed on the website of the authority. अगर PRA ने नहीं हटाया कोई suspended या blacklisted person तो उसमें आपका fault नहीं है, as long as वो website पे मौजूद था। Section 26 voluntary registration. हमने ये तो पढ़ लिया किन किन लोगों को रजिस्टर होना है, जो किसी भी तरह रूल्स में फॉलो कर रहे हैं उनको रजिस्टर होना लाजमी है। अगर आप खुद से किसी रूल में आप फॉलो नहीं कर रहे बट यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, कैन यू? यस ऑब्वियसली, आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, उन्हें क्या दोगे? They will be more than happy. So, section 26 subsection 1, a person who carries on an economic activity but is not required to be registered may apply for voluntary registration at any time. आप non-taxable services कह रहे हैं, you are not required to be registered, but आप चाहें तो आप voluntarily registration के लिए apply करके register हो सकते हैं. If a person who is not required to be registered apply for voluntary registration, the authority may register the person if the authority is satisfied that the person is providing or shall provide a service that is taxable service if the person was registered. Number 1, अभी नहीं provide करे लेकिन आगे हो सकता है कि या लाजमी है कि आप provide करेंगे taxable service once you get registered. B, the person has a place of business at which he carries on an economic activity. C, there are reasonable grounds to believe that the person shall keep proper records and file regular returns as prescribed under this act and rules. And D, if the person has commenced carrying on an economic activity, the person has kept proper record and complied with his obligations under other applicable taxation laws. Basically ये कि अगर PRA satisfy हो कि आप relevant जो taxable supplies हैं, taxable services जो हैं, you are about to make them या registration के बाद you are planning to make them और आप अपनी तमाम duties under this act fulfill करेंगे, record रखेंगे, etc. So they can register you under section 26 for voluntary registration. What about compulsory registration? Section 27, subsection 1. If the authority is satisfied that a person who is required to be registered and has not applied for registration, the authority shall register the person and shall not later than 15 days before the day on which registration takes effect, notify the person of the registration, the day on which it takes effect and the registration number issued to the person. अगर authority को है यकीन कि आपको register होना चाहिए और आप नहीं हो सके, तो आपको वो खुद रजिस्टर करके 15 दिन के अंदर आपको नोटिफाई करेगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, किस दिन को आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है और क्यों आपको उन्होंने रजिस्टर किया है। Subsection 2, no person shall be registered compulsorily without giving an advance notice. लेकिन ये करने से पहले PRA आपको एक नोटिस देगा, an opportunity of being heard.
Subsection 3, the authority may by notification and official gazette authorize any officer to perform any of the functions under this section relating to the compulsory registration of a person for any of the taxable services. PRA के पास ये इख्तियार है अगेन के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने के बाद अपने किसी भी ऑफिसर को वो ऑथराइज कर सकती है कि इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी फंक्शन PRA के बिहाफ पे वो परफॉर्म करे. Section 28 is important, suspension of registration. Subsection 1 subject to subsection 3 जो हम आगे पढ़ेंगे, which is in case the authority is not satisfied with the response of person or the remedial action taken by him or does not receive any response in specified time, the authority may suspend the person's registration. Subject to this provision, the authority may temporarily inactive the registration of a person if it is satisfied that the person is not entitled to be registered or has failed to comply with obligations under the Act or rules. For example, time पे return जमा नहीं कराई या अपनी tax liability नहीं pay की. Subsection 2 states of Section 28, the authority shall give notice to a registered person stating the reasons for temporary inactivation of the person's registration and remedial actions required to be taken by the person in such time as may be specified in the notice. 3 हमने कर लिया कि in case PRA is not satisfied with response of the person or remedial action taken or doesn't receive any response at all, it may suspend the registration. पहले temporarily inactive की फिर suspend कर दी. Subsection 4, the suspension of registration shall be effected by removing the name of the person from the list of registered person. अब सबको पता लग गया कि you are no more registered और इसकी बड़ी implications होती है. पंजाब में अगर आपने गवर्नमेंट टेंडर्स करने हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ लार्ज स्केल कॉर्पोरेट सेक्टर के एंटिटीज भी रिक्वायर करती हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो, तो इट कैन एक्चुअली हैव अ नेगेटिव रेमिफिकेशन फॉर योर बिजनेस एज पर से beside the penalties that you might face. Subsection 5, at any time within a period of 60 days of suspension. Suspension के 60 दिनों के अंदर the authority may withdraw the suspension if it is satisfied with the remedial action taken by the person. आपने जी रिटर्न जमा करा दी, आपने फाइन पे कर दिया, आपने टैक्स पे कर दिया, आपकी बहाल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन. Subsection 6, 60 days तक अगर आपने कुछ नहीं किया, then the authority may institute proceedings against the person in respect of alleged non-compliance under the Act. B, reinstate your registration, or if neither of these is done, cancel the registration. 60 दिन में आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है PRA. अगर उसको लगता है उसकी गलती है, आपकी reinstate कर सकती है रजिस्ट्रेशन या आपकी रजिस्ट्रेशन परमानेंटली कैंसिल कर सकती है. Subsection 7, no registration shall be cancelled again unless the authority PRA, either through inquiry, investigation or audit is satisfied that circumstances exist necessitating such cancellation, and under no circumstances the cancellation of registrations shall absolve the person of his obligations, other obligations and liabilities under the Act or the rule, which will bring us to the larger problem of deregistration altogether. But before that, we'll take some questions. Gee, how many questions we have, Ahmed sir? Around 5, 6. To begin with. First is from Shahzad Abed. He's saying, actually due to network problem, I couldn't get you. I repeat, the Ghazi security guard is providing guard services all over our branches in Pakistan. When we make payment to them, we deduct sales tax on services provided in the branches in Sindh and not deduct on services provided in other branches. Why? Where are you registered? Where is the Ghazi or whatever the name is, security services resident? So you have to look at these different factors. Next. Next is from Muhammad Adil Arshad. He is asking, please explain taxable services. अच्छा, इसको ना हमने डिटेल से सेक्शन 2 में कवर किया है. आप सेक्शन 2 देख लो या रिकॉर्डिंग सुन लेना, फिर भी समझ ना आए तो पूछ लेना. मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ.
PRA ने 14 डिफरेंट इंडस्ट्रीज कवर की हैं जिनको हम नेक्स्ट सैटरडे को शेड्यूल 1 और 2 में डिटेल से देखेंगे। उनमें से किसी में अगर आप फॉल कर रहे हैं और सर्विसेज मेक कर रहे हैं तो आप टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट is from Mohammed Iman. He's saying mashallah jazakallah. Jazakallah, subhanallah. Next is from Saad bin Khalid. He's asking what is meant by proper records over here. Generally, sole proprietors or small partnership businesses do not implement international accounting standards or have their accounts audited. So what should be deemed as proper for small-sized organization? Very good. It is open to subjectiveness and is normally what the accepted business practice is. Obviously, अब एक करियाने वाले ने सर्विस शुरू की है तो उससे आप ऑडिटेड अकाउंट्स तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके पास कैश रजिस्टर हो, उसके पास बैंक स्टेटमेंट्स हो, उसके पास प्रॉपर सेल्स परचेजेस का रिकॉर्ड हो, अपने डेटर क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड हो, कैश बुक उसकी मौजूद हो, एक सेट ऑफ अकाउंट्स मौजूद हो जिससे जो वो अपनी रिटर्न जमा करा रहे हैं उसको आप बैकअप कर सकें। सो एटलीस्ट अ बेसिक अकाउंटिंग सेट, और इसको जितना लार्ज करते जाए कॉर्पोरेट लेवल पे है तो वैसे ही रिक्वायर्ड है कि ऑडिटेड अकाउंट्स। सो बाय appropriate accounts, by proper records, it means what is required of you considering your size of business as a minimum to justify what you have been reporting to the authority. अगर कल वो आपका ऑडिट करने बैठे कि जी आपने ये रिटर्न कैसे की है, आप कहें जी ना मेरे पास इनवॉइसेस है, ना मेरे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ना मेरे पास कुछ है, मेरे पास तो बस बैंक स्टेटमेंट है, तो obviously that is not a proper record. I hope I made the point. Next is from Saad bin Khalid. Next is from Hamza Rahman. He's asking if retailers sold items in which sales tax is already included, like tea bags, soap in large quantity, to some organization, whether he further charge sales tax. When you are selling products, you do not fall under the purview of PSTSA. It's only applicable on services. Provinces only charge sales tax on services. If you are selling goods, you would fall under the purview of Sales Tax Act 1990 as administered by FPR, which we have already covered in detail, extensive detail in 3 sessions, which are available on ACCA's Vimeo channel, vimeo.com/ACCA Pakistan. Then extend it right away. मैंने ये रिक्वेस्ट की है हमारी टीम से, और इसमें अहमद भी बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं कि जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको बाय ट्रेनर नेम भी आइडेंटिफाई किया जा सके। तो होपफुली इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ वीक्स जब ये चेंज हो जाएगा आपके लिए और ज्यादा आसान होगा कि आप ट्रेस कर सकें सारे जो ट्रेनिंग सेशन है। अभी अगर आप सिर्फ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 लिख के सर्च करेंगे, अब तो अभी रिसेंट सेशन है तो आपको शुरू में ही अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप सेल्स टैक्स एक्ट 1990 लिख के सर्च करें तो यू कैन सर्च दैट सेशन राइट नाउ। जी। Next is from Mohammed Naveed Iqbal. He's asking, is there any requirement under any law to deal only with sales tax registered person? No. Shahzad Abid is saying regarding that Ghazi Securities, they are registered in SIN. Okay. Then why would you charge any other province tax? आप सिंध में हैं, वो सिंध में है, आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी ब्रांचेस सिंध में है, सिंध के अंदर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिंध का सेल्स टैक्स होगा। Nice and easy. Next is from Saad bin Khalid. You are lucky. आमतौर पे तो जो लोगों के साथ हो रहे हैं डबल टैक्सेशन इश्यूज, आपको तो इतना अच्छा सिनेरियो मिल गया। Next is from Saad bin Khalid. Is asking, is it necessary to have a bank account to justify the correctiveness of accounts? This is a further extension to my previous question. Thanks a lot. Saad, obviously, देखिए वैसे भी अब आप 25,000, 50,000 डिफरेंट आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट है, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है, ये तो अब रिक्वायरमेंट बनती जा रही है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप पेमेंट नहीं करते उसको आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट। दूसरी चीज ये है कि कैश पे आप कितना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे हैं तो ओके, फेयर इनफ, देयर कैन बी एन एक्सेप्शन कि आप विदाउट बैंक भी बिजनेस कर सकते हैं, बट इवन अगर आप मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी में आ रहे हैं तो इट्स प्रैक्टिकली it becomes very hard to conduct your business without a bank account. Next. That's all. Really? Yeah.
Okay, I'll give you 30 seconds. इसका मतलब है we are doing extraordinarily good today. The concept clear होते जा रहे हैं. Well, we always do, and that's thanks to you guys. आपका जो response है, because of that we arrange more of these sessions. और उसके लिए हम सारे अपनी Saturday sacrifice करते हैं. जी, any question? No. Then we'll continue. Thank you, Emma. So, section 29, deregistration. The authority, which is PRA, may deregister. अब हमारी suspension की बात हो गई. Suspension से आगे worst case scenario क्या है? Deregistration. The authority may deregister a registered person or such class of registered persons not required to be registered under the Act. Where any person registered under this Act believes that he does not satisfy the requirements for registration specified in section 25, he or she may make an application to the authority for deregistration. Business बंद हो रहा है, अब आप taxable supplies नहीं कर रहे, तो आप apply कर सकते हैं to get deregistered. Subsection 3, if upon receiving such an application, the authority is satisfied that the person is not required to be registered under this Act and has fulfilled the obligations under the Act, कोई pending उसकी return नहीं है, कोई tax उसकी तरफ due नहीं है, it shall deregister such person. Subsection 4, where the authority receives an application under subsection 2, it shall dispose the application within a period of 3 months for the date of the receipt of the application, or within such extended period not exceeding 60 days as the authority may for reasons to be recorded in writing fix. जहां पे आप खुद voluntarily deregistration के लिए apply कर रहे हैं, PRA should decide that within 90 days, yeah, if they have valid reason for a further 60 days, so the period can extend up to 150 days, which is almost 5 months. हाँ, जब तक आप deregister नहीं होंगे, you have to keep filing the returns, by the way, just to be on the safe side, nil returns. If you are not making any taxable supplies, assumingly, which was the whole reason in the first place for you to apply for deregistration. Chapter 5, it's about bookkeeping and audit proceedings. हम section 30 cover करेंगे, फिर हम questions लेके आज का conclude करेंगे. So section 30 is about issuance of tax invoices. Subsection 1. A registered person providing a taxable service shall issue a numbered and dated tax invoice. अच्छा, अब यहाँ देखें, आपको डिटेल से सारा पैटर्न बता रहे हैं कि किस तरह इनवॉइस इशू होनी है, जिसको वैलिड इनवॉइस समझा जाएगा. नंबर्ड हो, सीरियल नंबर हो, जो भी आपका सीरीज चल रही है, डेटेड हो, और उसमें क्या हो? नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी ऑफ द रिसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस और सर्विसेज, value exclusive of the tax before the tax, amount of the tax, and value inclusive of the tax. So before tax value and inclusive of tax for all the different services if you are providing separately. और जो provider है उसका name, registration number, address, और जिसको आप दे रहे हैं उसका name, address, registration number भी. Subsection 2, the authority may by notification in the official gazette specify such modified invoices for different services or persons and prescribe the manner and procedure for regulating the issuance and authentication of tax invoices. Like all the other things we study and discuss, authority and government के पास ये इख्तियार है कि different services या लोगों के लिए invoice के pattern change कर सके. Subsection 3, a registered person providing a taxable service may subject to such conditions and restrictions as the authority may, by notification in the official gazette, specify, issue invoices to another registered person or other recipient of taxable services electronically and transmit images or statements of such invoices to the authority as well as to the commissioner as may be specified. अगर अथॉरिटी अलाउ करे तो रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली भी ये इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं. इसका रूम रखा गया है ताकि टेक्नोलॉजिकली जो चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपडेट रहा जाए, लेकिन ये थोड़ा सा इशू आ जाता है क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई करना रिलेटिवली बहुत आसान होता है.
So, before I take the final question answer session, as I promised with you all, you have the contact details in front of you. You have my cell number, you have my email, you have the website address, but we are remaking the site, so it's under construction. I don't use Facebook, so there's an alternate Miller's Facebook, my MFP. You have my ID over there. You have my Twitter handle. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन if I'm engaged, तो just leave an SMS with your name and brief intro, and I'll get back to you. Best way is to send me an email. I'll respond to you as quickly as possible. अगर आप लाहौर बेस्ड हैं, आपके पास मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी हैं. My head office is based right in front of the main FPR office, just adjacent AG office, which is at the backside of Lahore High Court. We have opened a branch office in DHA too. It is behind Fazaldeen in the main commercial area of DHA H Block Market 16H. So you have these contact details जो आपके सामने खुली है. As promised, अगर आपकी कोई भी relevant या even irrelevant specific inquiry है, shoot me an email. I'll try to get back to you as soon as possible. But remember, 15 is the deadline for sales tax return and income tax return. So next week might see a bit of delays in responding to your emails. So with that, now you have any questions, any thing you need to seek clarification about, now is the time. First, I would request to focus on the session in hand. Ji Ahmed sir. First question is from Mohammed Mohsin. He's asking what is the difference between first and second schedule. If difference is only for rate, then it can be in one schedule. No, it's not the difference. आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे. मैं briefly बता देता हूँ. First schedule में classification है, subsection 38 है, I think section 2 का, जिसके मुताबिक classifications है, और schedule 2 में आगे specific rates है कि कौन से sector पे कौन सा rate apply हो रहा है. Faisal Manzoor is saying many thanks to ACCA team and the trainer. Hamza Rahman is saying it was a great session. Thank you. You are most welcome. मुझे शुक्रिया तो अदा करने दिया करें. You are welcome, Faisal, and highly appreciated, Hamza. Ji. That's all. Really? Saad bin Khalid is asking, sir, do you have vacancies for ACC affiliates? Saad, we are planning to expand, inshallah, around May. So shoot me a CV, and you never know the possibilities. Sir, had a very informative session. Thank you. Mohammed Naveed, thanks a lot, sir. Pleasure is all ours. Ghulam Sabir, sir, really helpful and appreciated session. Many thanks. You are most welcome, Ghulam sir. Keep the passion up, or hopefully I'll see you all guys next Saturday too. Saad bin Khalid saying thank you, Hamza Rahman. You are looking still fresh after a long session, as I am feeling tired. Well, you are most welcome, and now you can go have some tea, just get refreshed, and have a look on Vimeo ACCA channel on Tuesday. Just revise it a bit before you come in next Saturday, and inshallah you'll be feeling fresh too. Mohammed Ahmed Sheikh, thank you ACC for organizing a wonderful event. It was very beneficial for me and will continue to attend this session in future. How I can read Sir Omer's blogs. You are most welcome, and on behalf of ACCA, I thank you for your kind feedback and compliments. My blog site, you have my blogs on this social network site, Miller's Facebook. You can register just like you do for Facebook and read it there. I also have my blog published on WordPress, omerzaheermeer.wordpress.com. So you can simply access either of these and read the blogs. Next is from Rana Saqib Khan. He's saying thanks for the effort of all ACC members for arranging this webinar. Special thanks to Omer Zaheer for tolerating our irrelevant questions. Hope to see you in future soon. Rana Sahib, you are most welcome, and I love the questions because they show that you are engaged and want to learn. And for me, communication is a two-way process. I wish we had unlimited scope and time and I could answer all the relevant questions too. And I used to do that, as I told you before. Ahmed has a smile on his face when I said that. So there's no problem with the question, no issue with the relevant questions either. But if we ask relevant question, that just helps us all to focus more on the topic in hand. Next. Waqas Ahmed is saying thank you, sir.
Muhammad Hatif Sajjadar is saying looking forward for more sessions. You are most welcome. Sarosh Fatima is saying an amazingly comprehensive session as always. Mr. Umar, thank you. Sarosh, thank you as always, and thanks for your kind compliment. Naimullah Malik, thanks a lot, sir. Really helpful and hoping to see you again soon. Jazakallah. Inshallah, next Saturday. Mansoor Arif is saying thank you very much, Wall, Umar Saab, and ACC Pakistan for such informative session, and its explanation was very comprehensive. You are most welcome. The pleasure is mine. Waqas Ahmed is saying I learned a lot of new things today. Thanks again. You are most welcome, Waqas, and the hard work is paid off in the sense that it helps you grow professionally and you learn new things. Muhammad Adil Arshad, thanks, sir. It is a very helpful session in understanding sales tax. You are most welcome. Sarmat Heather, one question. In case HR services are provided, will the total taxable amount be the total bill amount that is including salary or just management fees? It depends on the kind of structure your HR company is pursuing. Normally, HR companies prefer to bill the amount that they are claiming for their services because the employee's salary is basically being transferred to employee. However, we'll be looking at these things when we cover schedules 1 and 2 next Saturday, inshallah. Shahzad Abid is saying thank you, sir, for your detailed explanation. You are most welcome, Shahzad. Muhammad Uzair Khan, very important and helpful we have done today. Thanks a bunch, sir. Sure. Hats off to you guys too. Sayyid Zainab Al-Zadi, looking forward for more sessions. Appreciate for your time and efforts. You are most welcome. Rana Saqib Khan is saying, in your professional opinion, to the extent we covered this act, what is the biggest flaw that taxpayers might still exploit, and what will be the significant improvement that could be suggested to FPR? Yeah, tell me one thing. Why we are always looking at the areas to exploit? Why not focus on compliance? Look, I'll tell you one thing. मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. दिन का सेशन खत्म हो रहा है, थोड़ा सा लाइटर नोट पे खत्म करते हैं. मैंने शायद पहले किसी सेशन में जिक्र किया कि नहीं, आप लोगों ने शायद नाम सुना सर रास मसूद का. If I remember correctly, सर सैयद अहमद खान के गालिबन पोते थे, ग्रैंड चाइल्ड थे भाई. बहुत बड़ा नाम था लीगल सर्कल्स में. तो वो ये कहा करते थे कि जी जो भी आप लॉ है ना, उसको जितना मर्जी आप सख्त बना लें, if you look hard enough, you can always find room to maneuver. उनके पास जी एक शख्स एक केस लेके आया, मर्डर का था, और केस ये था कि फांसी भी हो गई थी, सारी अपीलें भी एग्जॉस्ट हो गई थी, और चंद दिनों में फांसी थी. So Sir Ras Masood said to him कि आप अब मेरे पास ये मैटर क्यों लेके आए हैं? मतलब आप कहीं लोअर कोर्ट में किसी अपीलेट फॉरम पे कहीं ले आते, अब तो फाइनल अपील भी एग्जॉस्ट हो गई है, फांसी लगने वाली है, अब मैं क्या करूँगा? तो वो बंदा कोई देहाती था, उसने कहा कि जी आप फिर ऐसे ही कहते थे कि मैं इतना बड़ा ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी ले आओ, आई कैन फाइंड स्पेस टू मैनूवर. सर रास मसूद को वो बात लगी. He said, अच्छा, leave the file, I'll study. He studied. Next day he said to the guy कि I'll accept your case. आप ये फीस पे कीजिए, ये कागजात जो है वकालतनामा चलें साइन कर लें. उसने कहा जी कैसे करेंगे? सर रास मसूद ने कहा ये अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है. I've accepted the case, it's my issue. अच्छा जी, अब जिस दिन फांसी थी, to cut it short, what Sir Ras Masood was doing and did was, जेलर ने जो मुंह पे फांसी का तरीका ये होता है कि फेस कवर करके रस्सी वगैरह फिक्स कर देते हैं, जैसे ही किया सर रास मसूद ने जेलर को कहा ये प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है कि इसको अब उतार दें आप फांसी खाट से. जेलर स्टन हो गया, उसने कहा आप ये क्या कह रहे हैं? सर रास मसूद ने कहा ये आपका ऑर्डर है जिसमें लिखा है हैंगिंग. पहले ऑर्डर होते थे हैंगिंग, इसमें ये कहा लिखा है कि इसको मारो. जेलर ने कहा जी हम तो आज तक यही करते रहे हैं, कानून हमारे नजदीक यही है. सर रास मसूद ने कहा नॉट व्हाट्स रिटन हियर, देयर इज प्लेस टू मैनूवर. अगर आपने इसको फांसी दी तो मैं आपके खिलाफ मर्डर का केस करूंगा. एनीवे, अंग्रेज का ये होता है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देते हैं कि जो हमने बना लिया उसको फॉलो करें. तो द मैटर वेंट टू द वाइसरॉयज ऑफिस ऑल द वे टू ब्रिटेन एंड देन इट केम बैक कि हाँ ये क्या सही रहे हैं, हमसे ये लूप होल रह गया.
उस बंदे को फांसी से उतारा गया, he survived, सर रास मसूद ने अपना डिलीवर किया जो कहा था। उसके बाद बाकायदा लॉ चेंज किया गया जो फिर पाकिस्तान में भी एज इट इज अडॉप्ट हुआ, और हमेशा अब जज लिखते हैं हैंग हिम अंटिल डेथ। ये सुनाने का मकसद ये है कि प्लेस ऑफ मैनूवरिंग हमेशा होता है, जो हमने पढ़ा है इसमें भी है, लेकिन अभी हम कवर कर रहे हैं बेसिक्स फंडामेंटल्स। पहले हम पूरा एक्ट कवर कर लें, उसके बाद हम रूल्स कवर कर लें। जब आप उसको ग्रास्प करने की पोजीशन में होंगे, फिर एडवांस लेवल पे हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि ये चीज ऐसे मूव हो सकती है, लीगली ये मैनूवरिंग स्पेसेस यहाँ मौजूद है। दूसरी चीज अलबत्ता मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि पीआरए के पास बिगेस्ट वे टू रिफॉर्म इज, जो हम कॉन्स्टेंटली बात करते रहे हैं, और एसीसीए के प्लेटफॉर्म से भी और चैम्बर के साथ मिलकर हम प्रपोजल्स भेज रहे हैं, मिलेनियम लॉ एंड कॉर्पोरेट कंपनी भी, कि जो हार्मोनाइजेशन इश्यूज है उनको अगर सेटल कर दिया जाए, बिजनेसेस के लिए एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट आ जाए, तो इकोनॉमी आपका जीडीपी ग्रो करेगा, और ये तमाम अथॉरिटीज को लार्जेस्ट स्लाइस ऑफ द इकोनॉमी, लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्सेस मिलेंगे। नेक्स्ट is from Sayyid Zain Abbas Zaidi. He's saying, looking forward for more sessions ahead. Appreciate your time and efforts. You're most welcome. Muhammad Askar is saying the session is going to close and I would not like to miss to thank to ACC team and our mentor for such a nice event. You are most welcome. And Muhammad Bakir is saying thank you so much for the education and patience for answering the question over and over again. You are most welcome. Imran Khan, thank you all for conducting such an informative webinar. Imran, now I have remembered you. आपके हर सेशन में आपका नाम भी काफी यूनिक है, तो आपको कैसे हम बोल सकते हैं। Thank you for being there and for your kind words. Samia Irfan is saying thank you very much, Mr. Umar, for such a wonderful session. You are most welcome, Samia. Shehzad Abdul is asking, sir, are you on WhatsApp? Yes, I am. So yeah, that's another way. Javed Islam Bhatti is saying, I had sent an email to Umar Saab, request him to reply as he gets time. Thank you. Sure, I will. Muhammad Khalid Aslam is saying, thanks Mr. Umar and ACC Pakistan for continuous efforts for members' career development. You are most welcome. Rana Saqib Khan, I'm loving the way you are explaining things. Thanks for being so kind and that explanatory. You are most welcome, and I'm humbled by your gracious comments. Shehzad Sultan, thanks to ACC and Sir Umar. You are most welcome. Sadhu Zaman Arif, your efforts are highly appreciated. We'll request if face-to-face sessions are held as well, as that would help us to interact with each other as well. You are most welcome. ACCA do hold face-to-face session, and starting from April, they are planning to hold more of them. Sayyid Zain Abbas Zaidi, you must be tired by now. Have a great dinner. Thank you. Thank you, but Zariza, it's quite early for a dinner, don't you think so? That too on a weekend. Shehzad Abed, sir, I will WhatsApp you where I get stuck in sales tax. Sure. Samad Heather, thank you ACC team and Mr. Umar. Now let's go and enjoy our weekend. Sure, welcome. Okay guys, I would like to once again thank the entire ACCA team here, Ahmed, Bilal, Harun Jan Saab, the head of members affairs, Sajid, without whose direction this wouldn't have been possible. I would also like to thank you all for being there, for having this desire to enhance your professional development, to learn about things, and let us keep the passion intact. And inshallah, the sky's the limit. So I'll see you guys next Saturday, inshallah. Take care. Allah Hafiz.